since you have appeared last year as well, I would think that you know these basic things. अगर आपको चाहिए, if you still want, we can cover the basic subjects. However, having said that, I would suggest कि we focus on things that may have been actually bothering you rather than the basic stuff. वही का वही फिर से repeat कर दें तो that won't make much sense. आपको भी लगेगा कि इसमें नया क्या पता चला, कोई फायदा नहीं निकला. On the other सर hand, if you want, we can still do the basic DAF discussion like I would have done for a beginner. That is completely up to you, up to your choice. Having said that, however we do the discussion, कैसे भी discussion करें, I would suggest कि make a list of the keywords of your DAF and सर send that to me on WhatsApp. जी सर. तो I will review your DAF later on. I will add to that list. अगर कुछ और ऐड करने की जरूरत है, then I'll send that to Raj Malhotra's IAS study group. They will develop a question bank for you. तो सर उस बैंक में you can find HR questions, situational questions, opinion questions, DAF based top questions, obviously current affairs topics that you might want to prepare for the interview. उसके बाद जब वो क्वेश्चन बैंक मिलेगा तो try to research those questions thoroughly. Try to research each and every question सर and try to research each and every topic of your DAF. सर उसमें try to develop comprehensive set of सेट तो नहीं बोलना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज बेस की उसमें अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो आप थरोली डिस्कशन बना सकते हो. यू आर इन अ पोजीशन टू आंसर वन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन एंड थ्री क्रॉस क्वेश्चंस. ठीक है, उसमें कुछ आप सर नया बता सकते हो पैनल मेंबर्स को, उसमें कुछ आप फॉलो अप डिस्कशन बता सकते हो, कुछ ऐसा बता सकते हो जो अदर कैंडिडेट्स माइट नॉट हैव बीन टेलिंग सर और दैट पैनल मेंबर्स themselves didn't know. तब जाके दे विल बी क्यूरियस, तब जाके दे विल बी इंटरेस्टेड इन व्हाट यू हैव टू से. अदरवाइज वो बेसिक स्टफ तो हर कोई बता सकता है. एवरीबडी हु गोज टू द इंटरव्यू हैज क्लियर्ड मेंस. तो बेसिक कंटेंट तो हर कोई दे सकता है. देयर इज नथिंग वेरी स्पेशल अबाउट इट. सर ठीक है. तो प्रिपेयर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि अपने डैफ में यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट. अपने डैफ में यू हैव टू नो मोर देन द पैनल मेंबर्स डू. अगर अपने डैफ में भी यू आर फाउंड वांटिंग, अगर अपने डैफ में भी ये स्थिति रहती है कि पैनल मेंबर्स को they are not able to find something new in the discussion, you do not add value to the discussion. सर इंस्टेंस हो गए या तो इनोवेटिव मॉडल्स, केस स्टडीज हो गया, कुछ एनालिसिस हो गया, सर हो गया, डेटा हो गया, ऐसा कुछ भी अगर नहीं आता है डिस्कशन में जिससे कुछ वैल्यू ऐड हो या कुछ नया पैनल मेंबर्स को पता चले या क्यूरियोसिटी अराइज हो या फॉलो अप क्वेश्चन पूछें, अगर ऐसा नहीं होता तो इट मेक्स फॉर एन एवरेज 165 काइंड ऑफ इंटरव्यू. सर ऑन द अदर हैंड अगर आप डिस्कशन बनाते हो, they ask you questions out of curiosity, so that makes for maybe 190 and even 200 kind of interview. सर यू विल हैव टू पिक एंड चूज कि किस क्वेश्चन में आपको कितना डेप्थ में जाना है, किस क्वेश्चन में कितना आप क्वेश्चन, किस टॉपिक में कितना फॉलो क्वेश्चंस आप एंटरटेन करना चाहते हो. सर ठीक है. अदरवाइज वही बेसिक जेनरिक डिस्कशन करते रहोगे तो स्कोर नहीं आएगा. ऑन दी अदर हैंड, मतलब टू से इट दी अदर वे, आइडिया इज कि अपने डैश में ट्राई टू फिगर आउट सम की टॉपिक्स और उसमें कुछ सब टॉपिक्स जिसमें आप कंफर्टेबल हो. उसके कुछ लाइफ इंस्टेंसेस हो गए, इनोवेटिव मॉडल्स इन योर डिस्ट्रिक्ट, इन योर स्टेट और इन इंडिया, इन अदर कंट्रीज, है ना. सर अदरवाइज कुछ डेटा, पर्सपेक्टिव्स, एनालिसिस, रीसेंट अपडेट्स, व्हाट विल यू ब्रिंग फ्रॉम एक्स वाई जेड सब्जेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन. ये सब क्वेश्चंस में फिगर आउट समथिंग दैट यू वुड वांट टू से एंड ट्राई टू स्टार्ट रिलेटिंग देम विद द टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन एज मच एज पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल, आपके डाक की कोई स्कीम होगी, कोई टॉपिक होगा जिसमें कोई गवर्नमेंट स्कीम होगी एंड इट सर रिलेट्स अनदर डोमेन. जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की स्कीम्स कैन लीड टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एज वेल, है ना. सैनिटेशन की स्कीम्स कैन लीड टू हेल्थ केयर एज वेल. तो सर ऐसी चीजों को अपने डैफ के जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड गवर्नमेंट लॉज, पॉलिसी, स्कीम्स, मॉडल्स, केस स्टडीज, एनालिसिस, ये सब चीजें ब्रेनस्टॉर्म करो दैट यू माइट वांट टू यूज इन द आंसर्स एंड ट्राई टू स्टार्ट रिलेटिंग देम विद द टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन एज मच एज पॉसिबल. सर उससे क्या होगा, मान लो अगर कुछ डिस्कशन चल रहा है वहां पे यू आर एबल टू रिलेट वन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ योर डैफ विद द टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन, तो आप क्या करोगे, आप कंक्लूजन में एक पासिंग रेफरेंस दे दोगे उस कीवर्ड का जो आपके डैफ के टॉपिक से रिलेट करता है. एंड इट इज पॉसिबल कि पैनल मेंबर्स माइट आस्क यू अ फॉलो क्वेश्चन ऑन दैट सब्जेक्ट, और अगर ऐसा होता है तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू क्योंकि वो आपका प्रिपेयर डोमेन होगा. सर तो दैट इज अ वे टू डायरेक्ट द कॉन्वर्सेशन इन टू योर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट. बात समझ में आई. बिल्कुल सर. तो ये करने की कोशिश करो, ये एकदम ऐसे नहीं होगा, समझ रहे सर हो, ऐसे बैठे बैठे बिल्कुल. नहीं होगा. सिर्फ ऐसे कि हम सोच लें हाँ हम कर लेंगे और हो जाए, ऐसा नहीं होगा. प्रैक्टिस करोगे तब जाके हो पाता है. अदरवाइज इंटरव्यू में, प्रेशर सिचुएशन में सब चीज़ें दिमाग से उड़ जाती हैं. जो नेचुरली बिल्कुल. आते हैं वही निकलता है. एक चीज़ और है
किस टॉपिक में वन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पे ही खत्म कर देना है बाय सेइंग कि आई नो वेरी लिमिटेड अबाउट दिस सब्जेक्ट बट दिस इज व्हाट आई नो। किस टॉपिक में वन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, फोर क्रॉस क्वेश्चन, थ्री क्रॉस क्वेश्चन तक जाना है। किस टॉपिक में एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन और फॉलो क्वेश्चन में बोल देना है कि एज ऑफ नाउ दिस इज व्हाट आई नो, आई हैव टू रीड फर्दर बिफोर आई कैन कमेंट फर्दर। वो आपको डिसाइड करना है, पैनल मेंबर्स को डिसाइड करने दोगे, आप आंसर करते जाओगे तो वो पूछते भी जाएंगे। उसमें सर। अगर डिस्कशन बना पा रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर आपका ही टाइम खराब हो रहा है। सर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। पैनल मेंबर्स को अगर अच्छा नहीं लगा आपके साथ डिस्कशन जो किया, 30 मिनट में अगला कैंडिडेट आ जाएगा, उनसे बात कर लेंगे। और आपके लिए एक बिल्कुल सवाल सर। की बात हो जाएगी वो। बिल्कुल सर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि जिस टॉपिक में अच्छा डिस्कशन बना पाए उसमें फॉलो क्वेश्चंस एंटरटेन करना है। जिसमें नहीं बना पाएंगे अच्छा डिस्कशन, पता है स्ट्रेंथ का नहीं है, उसको जल्दी से खत्म कर देना है। हर टॉपिक में आई डोंट नो नहीं बोल सकते, इसीलिए किसी एक क्वेश्चन में, दो तीन क्वेश्चन में ये बोल सकते हो कि आई नो वेरी लिमिटेड, और फिर एक लाइन में बोल दिया। वो फॉलो क्वेश्चन में जाएंगे नहीं, इंटरोगेशन तो है नहीं, इंटरव्यू है। बिल्कुल सर। ठीक है, किस टॉपिक में आपको एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आंसर कर दिया, अगले क्वेश्चन के एंड में बोल दिया कि एज ऑफ नो दिस इज व्हाट आई नो, आई हैव टू रीड फर्दर बिफोर आई कैन आंसर। और किस टॉपिक में बिल्कुल क्रॉस क्वेश्चन एंटरटेन करते जाना है, किस में सीधा आई डोंट नो बोल देना, वो आपको चूज करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट। बट ऐसे पैसे मत रहना कि जो पूछते जा रहे हैं, जितना पूछते जा रहे हैं सब बताते जा रहे हैं, क्योंकि आप सर्वज्ञ तो है नहीं, यू डोंट नो एवरीथिंग। तो बिल्कुल सर। हैंडल द इंटरव्यू दैट वे, अदरवाइज आप ही का टाइम बर्बाद होगा। बिल्कुल सर। ठीक है? अच्छा, अब आप बताओ आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, किस पे बात करना चाहोगे। सर, दिक्कत तो एज सच एज ऑफ नाउ कहीं भी नहीं है, बट देर आर टू मेजर स्टिकी पॉइंट्स जहाँ मेरे को लगता है प्रोबेबली द पेनफुल एरियाज दे कैन बी। ए, कि वाई IAS आफ्टर IPS। बी, आई हैव बीन लाइक बोर्न एंड ब्रॉट अप इन पंजाब, बट मेरी ग्रेजुएशन CA, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग और सब कुछ दिल्ली का है। एंड देन मैंने होम गार्डर भी दिल्ली भरा है। तो इन दो एरियाज पे इफ दे वांट टू स्टिक तो प्रोबेबली कुछ हो सकता है, अदरवाइज आई थिंक बाकी चीजें तो डिसेंट से एक्सपोजर है, बाकी तो एफर्ट खुद करना है। कोई फर्क इसमें नहीं भी कौन। पड़ता, आपने होम कार्डर दिल्ली भरा है, आपकी एजुकेशन दिल्ली में हुई ना। अगर आप वहां देखोगे होम कार्डर वाली जगह पे, तो उसमें वो पूछता है कि बेस्ड ऑन 1 2 3 4 5 विच डू यू कंसिडर योर यस सर। यस यस यस। डॉक्यूमेंट, नहीं पूछते हैं आपसे। और पैनल के अंदर ओके तो आपको पेन तक नहीं ले जाने देते हैं, डॉक्यूमेंट क्या ले जाओगे। तो इट इज अप टू योर डिस्क्रिशन कि किसको आप होम कार्डर मानते हैं। बट सर। हैविंग सेड दैट, जिसको होम कार्डर मान लिया उसमें फिर क्वेश्चंस पूछने का कंप्लीट फ्रीडम पैनल के पास होता है। उसमें आप सर। फिर नहीं पूछ सकते हो कि होम कार्डर मैंने दिल्ली भर दिया पर अब मेरे से दिल्ली के ज्यादा क्वेश्चन मत पूछो, क्योंकि मैं तो वैसे तो पंजाब का हूँ, वो नहीं चल सर। पाएगा। एक बार भर दिया होम कार्डर दिल्ली, तो फिर दिल्ली में वो इनसाइड आउट कुछ भी पूछना पसंद करेंगे। आपसे ये तक सर। पूछते हैं कौन सी डायनेस्टीज थी, किसका क्या आर्किटेक्चर था, किसका क्या सोसाइटी था, और फिर कौन सी कैपिटल से मिलके बना है, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इन दिल्ली, सेंटर स्टेट रिलेशंस, पब्लिक पब्लिक ऑर्डर, पुलिस लाइन क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है दिल्ली में। सब कुछ पूछ सकते हैं, फिर वो नहीं बचेगा, वो सर वो प्रिपेयर्ड। थोड़ा वो थोड़े से लिमिटेड कवरेज है बिकॉज लैक ऑफ टाइम एंड ऑब्वियसली कुछ जितना हो पा रहा है उतना तो मैं कर रहा हूँ, बट देन ज्यादा थीमेटिक चीजों में फोकस कर रहा हूँ रादर देन हिस्ट्री और फैक्चुअल थिंग्स ऑफ दिल्ली। अगर लेट्स से दे आस्क, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी बिल आया था, द वेस्ट प्रॉब्लम, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, और मे बी दिल्ली NCR, ऐसे चार पांच थीम्स तो ऑब्वियसली आई कैन आंसर। बट देन दिल्ली की ऑल टुगेदर रीडिंग द एंटायर हिस्ट्री वो थोड़ा सा बेसिकली रिसोर्स होम कार्डर कंस्ट्रेंट को है। जैसे प्रिपेयर करना होता है उस डेट में तो जाते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि डैश में वन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन एंड फोर क्रॉस क्वेश्चंस, थ्री क्रॉस सर। क्वेश्चन सॉरी, टोटल चार लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग, इतना हैंडल करते बनना चाहिए। तो तो बाकी हर मेरे डेफ के टॉपिक पे आई कैन इजीली हैंडल ऑल द क्रॉस क्वेश्चंस हर टॉपिक पे। बस एक दिल्ली वाला एक स्टिकी पॉइंट है। तो दिल्ली में देखो, सेलिएंट इशू से स्टार्ट करो, वन थिंग विल लीड टू अनदर, व्हेन इज योर इंटरव्यू। सर 22 मार्च। है ना बट सर अभी। ट्रेनिंग में हूं ना सर, तो 1 घंटा हाँ, 1.5 घंटा हार्डली मिलता है। ये बात तो सही कह रहे हो। एटलीस्ट उसमें फिर मिटिगेटिंग चीज ये है, या एक्सटेन्यूएटिंग सर्कमस्टांस ये है कि ट्रेनिंग में हो, आईपीएस के साथ सबकी सिंपैथीज होती हैं ट्रेनिंग में, जो सर। प्रोफेशनल होता है आईपीएस का। सर। वो परेशान आदमी होता है, हर किसी को पता है। बिल्कुल सर। तो उतना वो ग्रिल नहीं करेंगे, कई बार तो ये तक कर देते हैं कि डैफ में तो पूछना ही नहीं, आईपीएस कैंडिडेट ने डैफ प्रिपेयर कर रखा होगा। अगर वो सर। हो जाए तो इट वुड बी सॉर्ट ऑफ लकी फॉर यू, आई सर। सपोज। है ना। सर डेफ तो मेरा पूरा प्रिपेयर्ड है एकदम, मतलब इन माई लिमिटेड नॉलेज मेरे को लगता है मैंने रीजनेबली वेल प्रिपेयर कर लिया है। यही बोलना। हाँ जी सर। हाँ हाँ। पूछेंगे कि आपको तो पता है, हाँ बिल्कुल पता है सर, पूछ लो, ऐसा नहीं मत। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो हो भी नहीं सकता सर। मतलब एक रीजनेबली वेल विद इन द लिमिटेड नॉलेज एंड लिमिटेड टाइम फ्रेम वो कर एग्जैक्टली। लिया है। लास्ट टाइम काफी ग्रिलिंग इंटरव्यू लिया था उन्होंने,
पुलिस एनकाउंटर्स और एक्स्ट्रा जुडिशियल, और उस पे 1984 खालिस्तान और वो सब पे. Though I was not couldn't handle pretty well, but I think I didn't budge. I kept smiling. Kept my cool. तो मार्क्स तो मैंने 2 बार इंटरव्यू दिए, दोनों बार अच्छे आए हैं, 190 आए हैं दोनों बार ही. बस फिर अ, अच्छी बात है ना, कहाँ दिक्कत हाँ है, जी. चल रहा है, दिल्ली में ही दिक्कत है। अब बस देखो, दिल्ली का है. दिल्ली का और जो क्वेश्चन बैंक मिलेगा उससे रिसर्च कर लेना। यू अंडरस्टैंड सर. दीज थिंग्स कि कहाँ कंपोजर और कहाँ डेथ में जाना है, कहाँ नहीं जाना है ना। सर. किस में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, किस में डिस्कशन बना सकते हो। यू आर एट द लेवल वेयर यू शुड बी प्लेइंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स। जब मेरे सर. एक बार अच्छा स्कोर आया था, यही 193 वाला आया था, तो मैंने तो ये करा था एग्जैक्टली व्हाट वर्क सर. बाय स्टेप, एग्जैक्टली वही करते जाओ। तो बेसिकली यू हैव सर. टू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ। दिल्ली इफ इट हैपेंस टू बी योर वीकनेस, तो जो क्वेश्चन बैंक मिलेगा उसको रिसर्च कर लेना, जितना लिमिटेड टाइम है, वन लिंक विल लीड टू अनदर। परहैप्स यू कैन यूज चैट जीपीटी टू गेट आंसर्स फॉर दीज थिंग्स। सर. उस पर मेरा आंसर मिल जाते हैं, तो एक चीज वो हो सर. सकती है। दूसरा, बाकी फिर आपका सिक्योरिटी, डिफेंस, मिलिटेंसी, टेररिज्म, लक्ष्य, इंसर्जेंसी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा। सर. इस पे क्वेश्चन आना एक्सपेक्टेड। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, नागरिक सुरक्षा संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, फिर वो साक्ष्य बिल और सर. न्याय संहिता, ये सब तो अभी एप्लीकेबल भी हो जाएंगे ना जून जुलाई से। सर. तो ये फर्स्ट तो जुलाई, यस इंपॉर्टेंट सर. हो जाएगा। सेलिएंट सेक्शंस ऑफ आईपीसी, सीआरपीसी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म, स्पेशल स्मार्ट पुलिसिंग, टेक्नोलॉजी इन वो तो पुलिस, पढ़ ले. इंपॉर्टेंट रहेगा। वो तो पढ़ भी लिया होगा, सर. सेशन भी वही रहेंगे उस पर वहाँ पे। सर, बाकी अगर इफ वी कुड हैव अ मॉक इंटरव्यू तो उससे ऑफ प्रोबेबली यू कोर्स, वुड बी एबल टू हाईलाइट माय वीक ऑफ एरियाज. कोर्स, बताओ कब करना है। सर, कल कर लें सर, या अभी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, इफ अभी यू कर। आर अवेलेबल, इफ यू आर अवेलेबल एज पर योर कन्वीनियंस सर. मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा स्पीकिंग प्रैक्टिस कर लो। हैविंग सेड दैट, अगर अभी करना है तो अभी कर लेंगे, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। पर मैं ये सजेस्ट करूंगा, एक आध दो हफ्ते की स्पीकिंग प्रैक्टिस कर लो, गेट इन द ग्रूव ऑफ थिंग्स। आई हैव इफ बीन प्रैक्टिसिंग रीडिंग फ्रॉम यू लास्ट कपल ऑफ मंथ्स. जनवरी से सिंसियरली न्यूज़पेपर तो कवर कर रहा हूँ, डेफ भी कर रहा हूँ. और स्पीकिंग एंड नॉलेज, मॉक. ये तो आपको हाँ जी पता है। सर. अपने कलीग्स के साथ मॉक ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस, 2 4 क्वेश्चन आई कीप डूइंग दैट. चलो अभी कर लेते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। यस सर, अगर फिर वो वीक एरियाज आप बताओगे तो आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन देम. ठीक है। अच्छा फिर सुजल, टेल मी कि व्हाट इज द सिविल एंड सिविल सर्विसेज। Civil is generally seen as a terminology. If we can divide the services in two parts, civil and uniform services. So uniform services are the one generally dealing with the security part of it, the army and the police, whereas army and the other paramilitary forces. Whereas the civil generally refer to the uh, forces which deal with the day-to-day issues and with the normal civilian population. Are you sure that we divide the services in police and civil and uniform? That way, police service is not civil service. Yes. And what is the point of conducting civil services exam to hire police officials? Uh, Sir, civil services, I think in my very limited knowledge, can be with the where the services deal with the day-to-day lives of the civilians, sir. So you think police does not deal with day-to-day lives of civilians? So police also deals with the day-to-day lives. So is police a I group for apologize. that? I would say civil services deal with the day-to-day lives of the people, and not really the segregation of civil and uniform services. Okay. चलो ठीक है। Tell me कि why do you want to go to IAS? IPS is also a very satisfying service. But sir, I believe that we have only one life, and in our life we should uh, work for the purpose which is very closest to our heart, which is most closest to our heart. And sir, to me, the nature of work, what IS entails in terms of developmental aspects, wider canvas to work upon, and policy formulation, sir, I really feel connected to it. Moreover, sir, I have been nursing my IAS dream since my childhood, so I felt that I should give my best to fulfill it if possible, sir. So policing does not have developmental aspects. Is that what you're saying? Sir, police also has a developmental role, but relatively it is indirect, sir, because to law and order is conducive to development, but IS entails the direct developmental aspect, sir. Acha. You said you have been nursing your childhood dream. You have been nursing your IS dream from childhood. Then why did you go to PricewaterhouseCoopers and Oracle Stays? Why did you go through such a circuitous route for your childhood dream?
Sir, it was actually a part of the plan because my parents wanted me to have a financial security and a kind of backup plan first, and I also agreed with their line of thought. So, sir, I did CA for to get my financial security, and then I worked only for 9 to 10 months to earn a reasonable sum to manage the next couple of years for my preparation, and then I started my preparation after 8 to 10 months of my job of my CA. After having qualified CA, you were set for life. You could have taken a break of 3 years, still you would have been one of the top notch in the field, right? Even if you unfortunately, even if you had not gotten into civil service, you could have just continued with CA ship. Why did you need to go for a job, especially when your parents, both of them, were in a job and they could have supported you financially? Don't you think that wasted your time? Sir, they only wanted me to be a self-reliant kind of thing. And sir, secondly, had I continued working in my job, in my CA job for 3 years, I think it would have delayed the ultimate objective I was striving for. And also, maybe that might lead to more barrier for me to switch, both in terms of psychological and the status quoism, and then there might also be pressure for my family that maybe you can continue now that you are doing well. So it was always because I thought that I need 1 year to prepare, so I left the job exactly 1 year before the exams. Okay. Acha, tell me, what will you bring from your experience as a CA to IAS? Sir, I think my experience as CA will help me in multiple aspects in administration, sir. Sir, number one is obviously the project management and financial management, because being IS also entails working on multiple projects, optimizing financial resources, and saving the very scarce financial resources of government. Sir, for example, when I was in Punjab PCS, then, as a part of district administrative complex, we had rented out certain rooms to a private bank. But the rental of that bank was stagnant from last 20 years. So when I went and saw that, then I requested and coordinated with the DC sir, and we started negotiations with them to actually incorporate an escalation clause in the rental agreement, give us the arrears, and we were largely successful in that, and we agreed upon like 10% escalation after every 2 years. So I think in that ways it can help. Sir, second, again, the budgeting part, the cost benefit analysis, how to optimize the given resources, integrate different schemes, that will also help. Third, sir, my internship is in internal audits and process management and review analysis. So using my domain knowledge, I can help in governance in last serving to the till the last mile, enhancing internal financial control, and establishing systems, institutionalized systems, so that better administration and ease of governance can be ensured, sir. Sounds like you're interested in economics aspect of it. Why don't you go to economic service then? Uh, Sir, again, sir, the very work profile of IAS, and then again the like how I always aspired to be in IAS. Those are the two main things, and I also believe that the with my limited experience in Punjab PCS, I really enjoyed it. So I think, sir, I would like to serve, and my capacities will be better utilized in this form of service, sir. What exactly do you like about IAS? Matlab, you have said 10 times that you nurse this dream, you think that you will be able to do well and you aspire for this, but why? What is so heavenly about IAS? Sir, it is about the nature of service, sir. The So same you could have got an NGO. In NGO, you can really well have a choice of sector where you want to work in. If you join larger NGOs, they have multiple verticals. You could shift from one to another, and then you could even go to project management. So what is it that is unique about IAS that attracts you? Sir, I believe, sir, being part of government gives you relatively better and more opportunities to work. Again, as sir, again, the wider canvas, the relatively wider exposure.
And also you can have a very both a very nuanced and a broad view of how the administration works, what are the roadblocks, how being connected to the grassroots, working at the grassroots can actually create impact and change lives of normal people. So that has always resonated with me, sir. Acha, but that you could easily do now in tech companies as well. And NGOs have spans across the borders. India mein to if you join civil service, mostly will be, or if you join IAS, mostly for the most part of your career, you will be restricted to working within India. And that is one of the best case scenario. Otherwise, you'll be restricted to a cadre. If you join an NGO like Doctors Without Borders, you're not a doctor, but then NGOs which have international presence, you could do work at the global level. Sir, sir, rather I would like to work in India at the very grassroots level only. Sir, in my private sector job, I got the opportunity to work in abroad, also in Brazil, in Japan. Rather, I was working in Tokyo, sir. I resigned from there and came back. So precisely the reason I want to work here only, sir. Any card I get, sir. Okay. Suppose you get Nagaland cadre and you're not able to get exposure of the entire country. Will you be happy? Yes, sir. I think it is the happiness you derive from serving the people and creating and changing the lives and creating impact, sir. So any part of India, sir, it's equally important. And rather, I would be happier to serve and face the challenges and give my a little contribution to changing What the kind lives of of people, challenges sir. autonomous district councils create in working in Nagaland? With my very limited knowledge, sir, I think it kind of there is a the the power struggle could be there, wherein the elected people, and the administration might have a different point of view. But sir, I really don't know the exact field level issues which are presently existing, Will sir. you think you will be happy working? Can you think of a corporate job where any person joins a corporate sector while without even knowing the work profile and saying that I'll be happy? Uh, Sir, we have a certain degree of knowledge about our job, but I think there is always an element of uncertainty and lack of knowledge, which is always associated and a level and an element of surprise. And especially with the rapidly evolving and changing scenario, I think we always have the bounded rationality, and we can never have the full knowledge of what we're aspiring for. But with the right intent, the right value system, and a belief in self and the knowledge we have, I think that is more than enough to go to the uncharted path and uncharted territories, sir. The knowledge that you have is enough to go to the uncharted territory. So, what kind of knowledge do you have about working with autonomous district councils and what is the role? What is their role in Nagaland? Sir, I'm sorry, sir. I have read about it, but I'm not really able to recall at this point Well, of time, please, sir. never mind. Acha, tell me, imagine if Kumbh Mela is going to be organized in your district in 6 months. How would you prepare for it? Sir, managing and organizing such a large level event, first of all, a lot of planning has to be done in terms of the expected footfall. 5 lakh The per day at the max in the city. 5 to 8 lakh people will visit. That is the peak. Now plan. Uh, Sir, in coordination, so in coordination with all the relevant departments, including the administration, police, the land revenue, the health, and The the field level. departments, tell me the exact things that you will do. Anybody can list the stakeholders. Sir, first, sir, managing the traffic routes, that from where all people will come, what is the carrying capacity of the roads, managing the deployment of forces, deployment of the medical services, the ambulances, different traffic routes. Then second, sir, in terms of security, the barricading, the deployment of drones, collection of intelligence, etc. Third, sir, most of the tourists who will travel will stay also. Accommodation arrangements will also have to be made. Maybe makeshift arrangements. If the proper permanent structures are not available, then makeshift arrangements in terms of tents, uh, deployment of ambulance, medical staff, fire staff, uh, and all those things will be done. Then, sir, given that it is a religious event,
then extra care and caution should be taken that the mischievous elements do not create disturbance and maybe use it as an opportunity to give it a communal color. So more focus should be done on that. Uh, and then, sir, the uh, that is what I can think of, sir, right now. You forgot one very important aspect that can create utter chaos. Can you think of it? It has something to do with urban governance, So, water and sanitation, sir, waste management. Yes. waste management, sir. Yes, How sir. will you prepare for waste management? Because if 5 lakh people are coming, they are going to be using the facilities. There will be wastewater, there will be food, there will be garbage, and there will be all sorts of organic and inorganic waste. How will you prepare for that? Sir, for sanitation, that temporary toilets will be arranged. Then proper waste management plan will be made in coordination with the State Pollution Control Board and the local officials. Also, efforts will be made to use the maximum the paper material, the recyclable material which can be recycled and does not impact the environment. And then, sir, workers will be hired so that the regular waste is collected, moved, and disposed of in line with the applicable laws and rules, sir. Okay. Tell me a couple of rules associated with plastic waste management. Sir, Plastic Waste Management Rules 2016, which were amended also, sir, recently. It includes the extended producer responsibility. In last year, the single-use plastic was also banned, and also it casts the responsibility of the plastic producer responsibility organizations, wherein they have to collect the plastic or maybe pay a certain fees to the local corporations if they are not directly engaged in that, sir. What can be the innovative models for reducing the use of plastic or handling plastic waste? Both of these. Feel free to mention models that are being adopted globally, not just in India. Sir, one model which I partly remember from Japan, and the exact country I'm not aware of, is wherein the vending machines are installed at multiple locations. Wherein, if you put in the plastic waste, the used plastic bottles there, and then you can get a certain associated amount refunded for the collected plastic waste you deposit or give back. In that way, sir, the circular economy and what the PM Modi is passionate about, that lifestyle for environment, those missions will also be fulfilled, sir. Acha, Honorable Prime Minister inaugurated certain projects today. Are you aware? Yes, sir. I know that global textile summit was organized today, sir. Okay. What is India doing to promote handloom? Sir, we have a multiple schemes associated with handloom, sir, like Aspire, and then also we there is also the Mega Textile Parks scheme, PM Mitra scheme, which is being implemented to encourage textiles. And also, sir, we are I'm just talking focusing, about handloom, not just all the textiles. sir. I really don't know about the exact operational schemes focused Yeah, on. anyway, other than textile summit, infrastructure projects worth 41,000 crores were inaugurated today. Are you aware? Uh, no, sir, I'm yet to read about it, sir. Okay. Anyway, not a problem. Acha, tell me ki, what are the canons of financial propriety? Sir, canons of financial propriety include uh, the the integrity part of it, then transparency, that the revenues and expenditures should be Obviously, trans. those should be the principle in financial propriety. Anyone can guess. That does not take a genius. Tell me the exact principles. Sir, sorry, sir, I'm not able to actually understand Not a what is. problem. Acha, as a bank manager, how would you give credit to business concerns worth 1 lakh, 10 lakh, 1 crore, 100 crore? Sir, any loan application has to be assessed on multiple parameters. First, sir, the financial background or the financial soundness of the party, which can be identified through their
existing net assets and liabilities, their current sales, their current interest. There are multiple ratios like interest coverage ratio, debt service coverage ratio, current assets ratio that can be included. Sir, second, the project report has to be looked into, that what is the actual purpose of raising the loan, and will that project be sustainable and financially feasible enough so that the interest payments and the principal amount can be serviced back. And then third, sir, non-financial parameters are also very important, like the the history of the party, whether they have defaulted elsewhere. And then, sir, the fourth, the applicable RBI guidelines, and looking at whether the party has outstanding loan from other banks using all the platforms like credit registry, the credit rating, and a holistic decision will be taken based on that information, sir. Okay, if you had such good information and such good decision making can be taken from registry and the database, how did this Mehul Choksey and Nirav Modi scam happen? Sir, actually, it had a very one major technical loophole, wherein the SWIFT system, which is used for international funds transfer, was actually not linked with their core banking system, sir. So the line of credit which was being extended through SWIFT, that was not reflecting in the ultimate accounts and the core banking solution, which is looked at by different banks before lending. And second, sir, there was a collusion between the parties and the local bank employees who were extending the line of credit, which led to this scam, sir. So you are a CA. Tell me what is issuer pays principle, or rather than principle, issuer pays concept. What is that? Sorry, sir, I was not able to hear, sir. Issuer pays. Issuer pays principle. Uh, Sir, actually, I am not able to actually understand the context of. In the context of credit ratings. Yes, sir. Sir, in the respect of credit ratings, issuer-based model says that the party or the organization which is issuing the debt securities, or maybe looking to raise the loan, they will pay for the services of the credit rating agencies, sir. How can that be addressed? Major flaw gives rise to conflict of interest. Yes, sir. So, sir, to tackle this conflict of interest and flow, sir, there are two, three prevailing models, wherein there one can be regulator pays model, or it can be uh, wherein the subscriber himself pays to get the ratings for a particular security. But then the subscriber Would pays that model is be very. won't that be very discreet and at the retail level? How would that actually work? Yes, sir. Actually, that is the problem with it. That is why it is not sustainable. And regulator pays model also will lead to a huge financial burden on the regulator. So the issuer pays model is the lesser evil, but to manage the challenges associated, It's one, a major there has to evil. be transparent. It is a major evil. Take a step back for 1 minute if you want to come up with a model that is foolproof, because there is one model. Sir, with my limited knowledge, as far as I read about it, it says that a hybrid of regulator pays model and issuer pays model, backed by uh, requiring multiple credit agencies to be onboarded, the transparent criteria on which the rating is given, the regular review of the rating, and also besides rating, giving the entire description of what all documents were looked into and what are the major risks still involved in that might be in the servicing. Anything that might turn the game, completely turn the game, make the credit rating agencies actually look deeper into it by just flipping the model of who they work for. Rather than regulatory structure things, tell me flipping the business model, that kind of idea. Sorry, sir, I'm not able to think about it at this point of time, sir. कोई बात नहीं, your interview is over. Thank you, sir. खुद ही बता दो, how do you think you did? Sir, starting civil वाला एकदम से, that was a shock. I was not able to.
tackle it to the as I should have been. क्योंकि आपने गलती से गलत बोल दिया ना, सिविल सर्विस और मिलिट्री सर्विस बाइफर्केशन होता है, सिविल सर्विस और यूनिफॉर्म सर्विस नहीं होता है। हाँ जी सर, वो एकदम से फर्स्ट क्वेश्चन एकदम ऐसा आ गया, तो देन आई कलेक्टेड माई सेल्फ। हम्म। आई थिंक उसके बाद प्लास्टिक वाला वाज फाइन। जो कुंभ उसके मेला पीछे आई। बहुत सारे क्वेश्चन थे। हाँ जी सर। प्लास्टिक वाला तो तो बहुत बाद में आया था, कुंभ मेला में आया था हाँ जी प्लास्टिक वाला। सर, उससे पहले यू ग्रिल्ड मी लॉट ऑन वाई IAS NGO में चले जाओ, अब्रॉड चले जाओ, नागालैंड में, और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वाला। Autonomous district council, obviously read about in pre and mains, was not able to really recollect it at this point of time. हम्म। बाकी NGO वाला, I think I handled सीए it. वाले में, हाँ यू हैंडल्ड इट वेल। सीए वाले में मेरा एडवाइस ये रहेगा, सिर्फ टेक्निकल चीजें बोलोगे इट विल ऑलवेज बी रिफ्यूटेबल। जैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग में बोलता कि सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट कर लेंगे, इरिगेशन इंजीनियरिंग कर लेंगे, ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चरल ये सब कर लेंगे, कोई मतलब नहीं सर है, सर्विस चले जाओ। सर इंजीनियर्स ऑलरेडी सर है ना, पीडब्ल्यूडी होता सर है, इरिगेशन डिपार्टमेंट होता है, इतने सारे होते हैं। सिर्फ टेक्निकल चीजें बोलोगे इट विल ऑलवेज बी रिफ्यूटेबल। नॉन सर टेक्निकल चीजें बोलो, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में बोलता था फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फ्रुगैलिटी, सिंप्लिसिटी, सिटीजन सेंट्रिसिटी, पंक्चुअलिटी, टीम वर्क, लीडरशिप, ये सब चीजें। यस वो सर द गुड थिंग वाज यू वर कॉन्स्टेंटली एसोसिएटिंग दीज विद योर लाइफ इंस्टेंसेस। सर वो जो आपने बोला था रेंट बढ़ाने वाला, दैट वाज अ गुड यस थिंग, सर लगा था कि लाइफ इंस्टेंसेस से एसोसिएट करो। मे बी दैट वाज समथिंग दैट यू यूज्ड टू डू ऑलरेडी, या मे बी यू डिड दैट आफ्टर द डिस्कशन वी हैड। एनीवे इट वाज गुड, मेरे को अच्छा लगा था। इट वाज गुड दैट यू वर स्माइलिंग। सर पर स्माइल का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अरे ये तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ गया है अब आएगा मजा। सर, ऐसा नहीं नहीं इंप्रेशन सर। नहीं जाना चाहिए। सर मेरे को नहीं भी आता था, देन ऑल्सो आई स्माइल्ड एंड सेड कि सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट और आई डोंट नो। तो आई थिंक स्माइल वाला, विद गॉड्स ग्रेस, दैट रिमेन्स। दैट हम्म। वाज देयर व्हेन दे वर टोटली ग्रिलिंग मी एकदम। दैट वाज स्टिल देयर हम्म। एक्चुअल इंटरव्यू में। तो वो थोड़ा सा है। बाकी यू आर डूइंग वेल, यू हैव स्कोर्ड वेल वंस, बाकी उसमें दिक्कत इतना नहीं है। अपने डिसिप्लिन में यू शुड बी थरो। कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, आई एम अ लिटिल बिट सरप्राइज कि ये क्यों नहीं पता है सीए को। सर क्या है इसका सर आंसर? 5 प्रिंसिपल्स होते हैं, गूगल कर लेना। नेवर नेवर इवन हर्ड अबाउट इट सर। 4-5 सर वो प्रिंसिपल्स, 5 प्रिंसिपल्स टैक्स होते हैं। टैक्स वाला तो नहीं सर, सर्टेनिटी और एक। नहीं नहीं, वो अलग होता है। कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी इज बेसिकली द प्रिंसिपल्स दैट गाइड यू टू स्पेंड पब्लिक मनी, कि कैसे पब्लिक मनी को स्पेंड करना चाहिए। वन ऑफ देम इज लाइक यू शुड स्पेंड द मनी एज इफ इट इज योर ओन मनी। जैसे आप अपना पैसा खर्च करते हो वैसे ही पब्लिक मनी खर्च करें। नेवर हर्ड अबाउट इट सर, नेवर। कर लेना सर्च, ठीक है, वो बहुत सर अभी अभी लिखिए सर, बट यस सर। नॉट अ बिग डील, बट आई थॉट ये तो पता होना चाहिए। सर फर्स्ट इंटरव्यू में एक्चुअली उन्होंने दे आस्क्ड अबाउट मी सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। तो और हम्म। वो लास्ट क्वेश्चन था, बट स्टिल आई डिडंट नो। कहते ये नहीं आता, कहते कोशिश करो। मगर सर एकदम नहीं याद आ रहा लास्ट क्वेश्चन। चलो जाता ठीक है, है, जाओ। कहीं कहीं हो जाता है, डैफ में ना हो तो बेटर है, हो जाए तो दैट मैक्स यू सर कैन सी। आई रियलाइज दैट आई शुड हैव नोन इट, बट इट एस्केप्ड माय अटेंशन, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप टू माय नोटिस, आई रीड अबाउट इट। नहीं आता सर तो क्या करें। ठीक है। बिल्कुल सर। जी सर। देखो, और दूसरी चीज ये थी जो एशियो पेस वाले पे चल रहा था, उसमें यू कुड हैव स्कोर्ड वेरी वेल। उसमें एक मॉडल ये मैंने कहीं पढ़ा था कि जो ये एजेंसीज हैं, फंड यस मैनेजर सर। वगैरह ये हैं, दे कैन पे एन इंश्योरेंस कंपनी टू सर सिक्योर द इन्वेस्टर्स या स्टेक होल्डर्स, जो भी उनका फंड, जो भी लोग हैं, इन्वेस्टर्स हो गए, स्टेक होल्डर्स हो गए, उनका फंड सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज को पे कर सकते हैं, दे कैन बाय इंश्योरेंस। एंड ये जो सीएज हैं या जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, वो इंश्योरेंस कंपनीज का रिस्क के बारे में असेस कर सकते हैं। यस सर। CS can work for these insurance companies to bring out the irregularities in the board of these people who are buying insurance. So CS यस सर। go double down on everything, every small irregularity that there can be. वो रेगुलेटर्स कभी खुद नहीं पकड़ सकते, उतना डेप्थ में जाते ही नहीं है। ठीक है सर। मतलब इंश्योरेंस कंपनीज गिव एन इंश्योरेंस एंड दे हायर ए सीए हु विल डू एन ऑडिट ऑन देयर बिहाफ। यस। ठीक है सर। तो सर बाल की दिस खाल आई। निकालनी चाहिए फिर उसके लिए। यस 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 सर। Every irregularity that there can be, that can बिल्कुल lead सर। to loss of public money can be found out. यस सर। So that is just one model that I read somewhere. वो I thought it was much better than existing things. True, sir. Sir, actually, sir, Samiksha Jain also referred you to me. So we discussed this model related to CA's auditing the firms and statutory audit में. But then I could not really relate it to this credit rating also, sir. She told me about this model. एनीवे पॉइंट इज, अपने डोमेन में यू शुड बी एबल टू टेल, जैसे मैंने बोला था, यू शुड बी एबल टू टेल थिंग्स न्यू, टेल न्यू थिंग्स टू द पैनल Yes, मेंबर sir. जो उनने कभी ना सुना हो या फिर दूसरे लोग ना बता रहे हो।
यस सर। दैट इज हाउ आई यूज टू डू इट, क्योंकि मेरा थोड़ा अकेडमिकली ओरिएंटेड प्रोफाइल था, तो वो ज़्यादा अच्छा डिस्कशन बनता था उससे, इफ आई यूज टू जी टेल। सर। अदरवाइज एवरीबडी कैन प्ले एंड दे डू प्ले ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, तो जो भी आपका स्ट्रेंथ रहेगा डू कैपिटलाइज ऑन दैट। बट अगर कुछ नया सर। डिस्कशन बना सकते हो दैट वुड बी ग्रेट। सर। ठीक है, ट्राई टू यूज मोर डेटा, मोर एग्जांपल्स एज मच एज पॉसिबल, ट्राई टू डायरेक्ट द इंटरव्यू। एटलीस्ट अपने डैफ में जितना खींच सकते हो वो खींचना, बाकी तो आप अच्छा कर ही रहे हो। सर। ठीक है, एनीथिंग एल्स? सर नथिंग एज ऑफ नाउ, मतलब आपके हिसाब से व्हाट शुड आई बी फोकसिंग अपॉन? जो चीजें आई मिस्ड आउट, ऑब्वियसली आई विल बी रीडिंग अबाउट देम। वो तो दो तीन चीजें फैक्चुअल टाइप की हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोकस ऑन योर डैप एज मच एज पॉसिबल, करंट अफेयर्स में जितना हो पाए एटलीस्ट अपडेट तो रहे। जैसे आज के इनॉग्रेशन का नहीं पता है आपको, वो पुलिस वाले बेचारे होते हैं, समझ सकते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं, सर और हाँ, ऐसी वो कल बाकी न्यूज़पेपर चीजें। में आएगा सर, तो ऑब्वियसली आई विल रीड हाँ अबाउट इट। हाँ, तो दैट कैन बी हाँ, वन बट थिंग। जो आज तक का कवर हुआ है, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर डिलीजेंटली डेली। ठीक है फिर, ठीक है फिर तो दिक्कत नहीं है। हाँ जी, वो तो नोट्स वोट्स बना के एकदम डिलीजेंटली कर रहा हूँ। अभी भी सर देहरादून ही आए हुए हैं अटैचमेंट पे, तो बट आई एम स्टिल वर्किंग फॉरेस्ट डिलीजेंट। अकेडमी? अब सर सुबह फॉरेस्ट एकेडमी थी, अभी कल इंडियन मिलिट्री एकेडमी है सर। अच्छा, अच्छा ठीक है फिर, अच्छी बात है, कर लोगे, नॉट अ प्रॉब्लम। करंट अफेयर्स जितना कर पाओ, मतलब वो पुलिस के साथ लिमिटेशन तो होता ही है, उसमें क्या बोले। हाँ जी डेफिनेट सर। क्वेश्चन बैंक जो मिलेगा उसमें सिलेक्टिवली जो आपके की टॉपिक्स हैं दैट यू थिंक यू नीड हेल्प विद, वो उसमें कवर कर लेना। सारा तो शायद ही कवर कर पाओगे बिकॉज यू सर। आर। सर। सर। बाकी वाई आई एस का सोच लो थोड़ा, वो चाइल्डहुड वाला इट साउंड जुवेनाइल, कि पिताजी ने कहा कि नौकरी कर ले तो नौकरी कर ली। बचपन नहीं से सर। जाना चाहिए था ना, यू शुड हैव स्टेप्ड इन, यू शुड हैव टेकन द कॉल, कोई बात नहीं 2 साल तक कर लेंगे। सर वो देखो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाला एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट था सर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि अब ठीक है, मैंने अपना खुद के पैसे से मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, एंड आई हम्म। हैव गोटन एक्सपोजर, आई कैन ऑलवेज गो बैक टू इंडस्ट्री इफ आई एम नॉट एबल टू क्लियर सिविल वो तो आपको सर्विसेज। आर्टिकलशिप से भी एक्सपोजर मिल जाएगा ना, कौन सा ऐसा सीए होगा हु विल स्ट्रगल फॉर एम्प्लॉयमेंट इवन इफ देयर इज अ गैप ऑफ 2-3 years। तो सर दैट इज वाई सर मैंने आई कंप्लीटेड इन सितंबर एंड आई डिड जॉब अप टू अप्रैल और मई। सो इट वाज लाइक 8 to 9 months, और एक ही साल चाहिए होता था तैयारी के लिए, दैट इज व्हाट आई हर्ड। तो एक साल पहले आई लेफ्ट, कि भाई तब 2.25 साल बच रहे थे, तो एनीवेज 9 महीने में तैयारी नहीं हो सकती थी। सो आई प्लान किया 8-9 महीने आई लेट मी डू द जॉब, अर्न मनी, गेट एक्सपोजर, एंड देन आई विल प्रिपेयर। तो दैट इज हाउ आई प्लान। मतलब सर वही वाई आई एस में और बेटर क्या बोला जा सकता है? देखो, इट शुड बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट क्रॉस क्वेश्चनिंग, ऐसा इनकंसिस्टेंसी नहीं आना चाहिए। अच्छा, समझ लो, उसमें सर। कन्विक्शन होना चाहिए, और देन इट शुड बी कंसिस्टेंट विद योर डैफ। क्योंकि सबसे बड़ी इनकंसिस्टेंसी तो मुझे ये लगी थी, बचपन का सपना था, तो पेरेंट्स तो बड़े खुश होते हैं कि बच्चा आईएएस बनना चाहता है, तो काहे सर। को प्राइवेट सेक्टर। वो थोड़ी सर। इनकंसिस्टेंसी लगी थी, भले अब हो ना हो, भले ही आपका कुछ सर। थॉट प्रोसेस था, बट इनकंसिस्टेंसी नहीं लगना चाहिए क्वेश्चनिंग में। कंसिस्टेंट विद प्रोफाइल ऑन पेपर, कंसिस्टेंट थ्रू क्रॉस क्वेश्चनिंग, ऑनेस्ट बट नॉट आइडियलिस्टिक, नॉट हैविंग क्लीशेड वर्ड्स दैट एवरीबॉडी इज यूजिंग। रीजन सिमिलर हो सकता है, क्लीशेड वर्ड्स नहीं होना चाहिए। हाँ, बात डाइवर्सिटी टाइप्स। एग्जैक्टली exactly. ये एक वर्ड तो सर। बिल्कुल मत बोलना। सर कुछ तभी और वाइडर बोल कैनवस देना। बोल रहा सर। कुछ और बोल देना जिसका मतलब वही हो, बट ये मत बोलना। सर। ठीक है, तो तो ऐसे करके सर बता सकते हो। मेरा आंसर ये था कि लर्न फ्रॉम द वाइडेस्ट वैरायटी ऑफ सोर्सेज, अप्लाई myself with the largest possible scale, contribute in the most direct manner, essentially diversity but avoiding this one word। अब कंट्रीब्यूट इन द आंसर मोस्ट डायरेक्ट मैनर। मिल जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। सर। हाउएवर, हाउएवर हैविंग सेड दैट इट शुड बी कंसिस्टेंट। जैसे मैंने बताया था ना, मेरा एकेडमिक प्रोफाइल काफी था, एकेडमिकली बिल्कुल ओरिएंटेड सर। प्रोफाइल था, तो उसमें लगता था सुनने में ठीक कि पहले आईआईटी कानपुर गए, फिर रिसर्च कर ली, रिसर्च इंटर्नशिप बाहर इंडिया सब कर लिया, उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विस में आ गए, उसके बाद यहाँ आ रहे हो, और उसके सर। बाद पहले डिफेंस अकाउंट्स, फिर कस्टम्स, फिर आईएएस, तो इतना क्यों। सर। तो उसमें सर। कंसिस्टेंट लगता था कि ठीक है, क्यूरियोसिटी एंड लर्निंग वाला एस्पेक्ट है, एंड देन एप्लीकेशन है, इसलिए रिसर्च से सिविल इंजीनियरिंग में गए, सिविल इंजीनियरिंग के सर। बाद लगा बहुत सारी चीजें सीखने, तो यहाँ पे आ रहे सर। हैं। वैसा कुछ होना चाहिए जो आपके डैप से कंसिस्टेंट लगे। सर। कंसिस्टेंट नहीं लगे तो एटलीस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी तो ना लगे। सर। ये जो चाइल्डहुड वाला बोलोगे, दैट साउंडेड टू मी लाइक अ मेजर रेड फ्लैग, कि चाइल्डहुड था तो क्या कंफ्यूज थे, अपनी कैपेबिलिटी पे कंफ्यूज थे, या किस पे कंफ्यूज थे जो प्राइवेट सेक्टर में इतना टाइम लगा है, या गए ही क्यों, तभी से कॉलेज से ही तैयारी शुरू कर लेते। तो सर अगर ये क्रॉस क्वेश्चन आएगा जैसे आपने पूछा कि यू नो व्हाई नॉट डायरेक्ट और ये सब, तो इफ आई रिप्लाई टू इट इन दिस मैनर कि प्लान बी अगर मैं प्लस आपकी फाइनेंशियल। जगह होता तो ये चाइल्डहुड वाला हटा के बोलता कि देर आर प्रैक्टिकल लिमिटेशंस, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल लिमिटेशंस में बोलता, बट ये जस्टिफाई करता कि हाँ ठीक है, मेरे को अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए था, इसलिए मैंने ये रास्ता लिया, आई मेड अ स्ट्रैटेजिक चॉइस।
बट चाइल्डहुड वाला हटा देता, क्योंकि इट स्टिल कैन बी सीन एज द कन्फ्लिक्टिंग थिंग। तो सर अभी जो सर मैंने सोचा है बोलने का सर, तो लेट्स से इफ यू आस्क की व्हाई आईएएस, दिस इज अनडाउटेडली आईपीएस इज अ वेरी coveted service, but sir I believe we have only one life and we should devote our life to a cause which is closest to our heart. And sir, to me, the kind of work what IS entails in terms of developmental aspects, wider canvas to work upon, and working at the grassroots level, I really feel connected to it, and that is why, sir, I'm trying, उसमें and that is देखो, why, एक तो ये फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट की वी हैव ओनली वन लाइफ, दैट इज डिबेटेबल। sir, मल्टीपल हाँ मतलब फिलोसफीज दैट यू हैव मल्टीपल लाइफ्स, मे बी नॉट ठीक है ह्यूमन सर, बट इन सम अदर फॉर्म, एनीवे वो उस पे नहीं जाते हैं। दूसरी सर चीज ये है कि व्हाट गॉट यू दिस ओरिएंटेशन एंड हाउ डिड यू एनालाइज इवन बिफोर ज्वाइनिंग पंजाब पीसीएस, हाउ डिड यू फील दैट? फिर उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग विद योर लाइफ इंस्टेंसेस वो प्रिपेयर कर लेना फिर। ठीक है सर। ठीक है। तो उसमें तो सर वही है कि डे टू डे कॉन्वर्सेशन में फैमिली में आप सुनते हो कि कि आईएएस इज समथिंग मोर अ, प्रोफाउंड, समथिंग मोर प्रोफाउंड। डे टू डे कॉन्वर्सेशन में तो आप ये भी सुनते हो कि गूगल ने इतना बड़ा कुछ ऐसा डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी दैट वुड हेल्प पीडब्ल्यूडीज, डिफरेंट लेबल पीपल, है ना। सर, डे टू डे कॉन्वर्सेशन में एनएसए शिवाजी दोवल के बारे में भी सुनते हो कि ही डिड इमेंस illustrious contribution to the country. सर, Many IAS officers would not have been able to do that, right? So why don't you सर, continue with IPS? डे टू डे कॉन्ट्रीब्यूशन में तो आप ये भी सुनते हो कि XYZ इन्वेस्टर recognized a business model or a startup and turned it into a unicorn. तो वो सब क्यों नहीं कर रहे हो? डे टू डे कॉन्वर्सेशन इज नॉट प्रोफाउंड इनफ टू माय माइंड। सर रीजन तो यही है, मतलब जो सत्य है। अब आई विल हैव हाँ, टू, रीजन यही है, तो उसमें मोर try to think of things or bring up things that are more impactful in that short limited conversation that you have. आप नई लाइफ इंस्टेंसेस अगर कुछ उठाना चाहोगे तो रादर देन डे टू डे कॉन्वर्सेशन दो इंस्टेंस उठा के उसकी बात करो। ठीक है सर, झूठ थोड़ा ना बोलने को कह रहे हैं, बट इम्पैक्ट भी तो पड़ना चाहिए। बिल्कुल सर, मतलब दैट इज व्हाट आई वुड से। अगर आपको लग रहा है कि नहीं चल जाएगा तो बेशक वही करो, क्योंकि जैसा मैंने पहले बोला था, जब मेरे एक बार अच्छा स्कोर आ गया था तो मैंने एग्जैक्टली वही करा था जो चले। सर, सर, ठीक है, इंप्रूव करने के चक्कर में खराब मत करना। मेरा जो टेक नहीं है नहीं, वो तो रहेगा ही, बट सर, जॉब ठीक है, कर लो उसके बाद। सर, ठीक है। ठीक है सर, कन्विक्शन होना चाहिए और कन्विंसिंग होना चाहिए उसमें। अगर कन्विंस नहीं कर पा रहे हो दूसरे तरीके से, चार लोगों को और सुना के देखना, हो सकता है मेरे को सुना के देख लो। कन्विंस नहीं कर पा रहे हो तो स्टिक विद व्हाट यू हैव ऑलरेडी। सर, ठीक है। सर, व्हाट एल्स? सर आई थिंक अभी तक आई हैव माय क्वेरीज आंसर्ड, तो इफ समथिंग कम्स अप तो आई विल डिस्टर्ब यू अ बिट सर। ऑफ कोर्स, नॉट अ प्रॉब्लम। वैसे डेली 8 बजे शाम को एक सेशन भी करते हैं हम लोग, जिसमें भी आंसर क्वेरीज, बट दैट इज ठीक अ है सर, वन टू मेनी सेशन, नॉट अ वन ऑन वन सेशन। ओके सर। तो यू कैन ज्वाइन एज पर योर कन्वीनियंस, नहीं तो फिर मैसेज भी कर ही सकते हो। हाँ जी सर, मैं अभी मतलब 5-6 दिन तो भी 7-8 बजे तक चलेगा सर, आईटीबीपी में वो जो अटैचमेंट वगैरह होती है, हम्म। तो मे बी पोस्ट दैट सर, आई ठीक है। एंजॉय। ठीक है। जी सर। चलो देन, गुड लक, टेक केयर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन सर, थैंक यू सो माय मच। प्लेजर, हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।